Hello guys, this is MD Samimuddin Mullah. Currently I am a first professional MBBS student at Midnapur Medical College. In previous video I had discussed the MCQ of chapter Structure of Atom, and in this video I will discuss the MCQ of chapter Periodic Table which were asked in examination during 2015 to 2020. Now guys, start with the very first MCQ of 2020. Identify the incorrect match. Unyl anium, इसका नाम मेंडेलिवियम है, करेक्ट. Unyl trium, lawrencium, this is also correct. Unyl hexium, sevorgium, this is also correct. Anium, Darmstadtium, no, it is not correct. Anium is basically Roentgium. So our correct option is option third, D4. This is not correct match. तो मैं एक काम करूंगा, पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो में अटैच कर दूंगा, ठीक है. Now move on to the next MCQ. For second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy. So first, let me clear what is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is nothing but it is the energy required to remove the electron from outermost shell, right? To remove this electron, which amount of energy is required, that is called ionization enthalpy. It depends upon the nuclear charge and also the stability of the electronic configuration. So let's look into the options. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So let's write their electronic configuration. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Lithium 1s2, 2s1, and beryllium 2s2, 1s2, 2s2, and this is 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 and 2p6. Okay, so you can easily look here that beryllium has stable electronic configuration, that is 2s2, and also nitrogen have half filled 2p, that is also stable. So here two twist is occurred, that is beryllium has more ionization energy than boron, and nitrogen has more ionization energy than oxygen. So our correct order will be lithium, then boron, then beryllium, then carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine, last neon. Lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon. So our correct option is option B. Understand? So थोड़ा सा पोर्शन नीचे से कट हो गया था. So once again I am repeating that. What is ionization energy? Ionization energy is nothing but this is the energy required to remove the electron from the outermost shell, and it depend upon the nuclear charge. Nuclear charge जितना बढ़ेगा, nuclear charge क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है. तो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा. एंड ionization energy also depend upon the stability of the electronic configuration. Now move on to the options. ऑप्शन में क्या कर दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो.
सो लिथियम का 2s1, बेरिलियम का 2s2, बोरॉन 2p2, कार्बन बोरॉन 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5 and neon 2p6. And beryllium have stable electronic configuration of 2s2 and nitrogen have stable electronic configuration, that is 2p3. Here two twists occur, that is beryllium has more ionization energy than boron and nitrogen has more ionization energy than oxygen due to its stability of electronic configuration. So our correct order is lithium, then boron, then beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon. And our correct option is option B. Now move on to the next MCQ of 2018. Which of the following oxides is most acidic in nature? So, beta, mangue, car, scooter. So we know that as we move from top to bottom, the metallic character increases. Metallic character increases. So this is less metallic, and this is more metallic. And also we know that metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. So we can conclude that this is more metallic. So this so its oxide will be more basic, and this is less metallic. So its oxide will be less basic and more acidic. So our answer is BeO. BeO will be the most acidic. So correct answer is option B. This problem is based on Fazan's rule. Fazan's rule. What is Fazan's rule? It says small cation, large anion brings more polarization and it brings more covalent character. And its opposite, large cation, small anion, less polarization and it leads to more ionic character. So simple है. अब हमें क्या करना है, एनायन का साइज तो देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि एनायन सब में सेम है. जस्ट हमें देखना है कि कौन सा कैटायन का साइज सबसे ज़्यादा है एंड कौन सा कैटायन का साइज सबसे कम है. सो बेटा, मांगे, कार, बाप, कार, स्कूटर, बाप. सबसे बड़ा साइज है बेरियम का एंड सबसे छोटा साइज है बेरिलियम का. सो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सबसे कम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. इजी. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज option A. Now it's turn for the next MCQ of 2017. The element Z equals to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family group and electronic configuration? So new element इसका Z है 114.
इट मीन्स इसके अंदर 114 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड रेडॉन, रेडॉन का Z कितना होता है? रेडॉन का Z होता है 86। सिंपली सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इधर होगा। सो 28। सो सिंपली चेक करना पड़ेगा इनमें से किस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 28 है, वही हमारा आंसर होगा। सिंपली काउंट कर लेते हैं 24, 26 एंड 6, 32। सो ये आंसर नहीं है। हैलोजन फैमिली 24, 26 एंड 5, 31, ये भी आंसर नहीं है। कार्बन फैमिली 86 और यहाँ पर 24, 26, 28, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कार्बन फैमिली ये भी चेक कर लेते हैं 24, 26, 30, दिस इज नॉट करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज इन ऑप्शन सी। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट MCQ, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe आयरन Z equal to 26 is not equal to the number of electrons in which of the following। so, कुछ नहीं, इनमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन काउंट। तो देख लेते हैं आयरन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयरन 26, इट इज आर्गन 4s2 3d6। क्या बोला है? डी इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। तो आयरन में डी इलेक्ट्रॉन कितना है? आयरन में डी इलेक्ट्रॉन है 6। एंड गाइज आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? आयरन +2। सो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? 4s2 से निकलेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s0, 4s0, 3d6। स्टिल डी इलेक्ट्रॉन इज 6। नाउ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्लोरीन 17, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। सो p इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन, इनमें p इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, 2p में 6 है एंड 3p में 5 है। सो टोटल p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज 11। So this is not equal to the d electron of iron +2. So our correct answer is option A, p electron in chlorine. This is the correct answer. Now बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। d electron in iron, simple iron, आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d6 एंड आयरन में 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, which is equal to the d electron of Fe+2। and option C, p electrons in neon, neon के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। neon 10, 1s2, 2s2, 2p6, p electron, so p electron here is also 6, which is equal to the number of electrons, number of d electrons of Fe+2। एंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं एस इलेक्ट्रॉन इन Mg, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। हियर एस इलेक्ट्रॉन इज 2 + 2 + 2, that is also 6, which is equal to the d electron of Fe+2। so our correct answer is option A। Now next MCQ of 2015, the species argon, potassium plus calcium +2 contain the same number of electrons, that is isoelectronic species, in which order do their radii increase? So isoelectronic species है argon, potassium plus calcium +2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इन आर्गन, आर्गन कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन। एज दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सो everyone contains same number of electron, 18, and this is also 18, but nuclear charge differ here।
nuclear charge of argon is 18, potassium plus 19, and calcium plus 2 has a nuclear charge 20. So here nuclear charge is comparatively more, and number of electron is same in each and every species. So here more attraction on the electron. So size of the calcium is less here. Calcium plus 2 has smaller size. Calcium plus 2 has smaller size. And in case of argon, the number of electron is same, but the nuclear charge is comparatively less. So here electrons will feel comparatively less attraction. So size of argon will be more among these. So the correct order is, the smaller is calcium plus 2 and the larger is argon, and in between them potassium plus lies. So the correct order is calcium plus 2, potassium plus and argon, which is in option B. So our correct answer is in option B. Now we are at last MCQ of today's session, and which is the most easiest one. Beryllium plus 2 is isoelectronic with which of the following ions? We know that beryllium contains 4 electrons, and beryllium plus 2, it means it releases 2 electrons, and beryllium plus 2 contains 2 electrons. Now check options one by one. Lithium, it contains 3 electrons, and lithium plus 1, it means it releases 1 electron and contains 2 electrons, which is isoelectronic with beryllium plus 2. So our correct answer is in option A. Thank you. That's all for today. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. I made video related to MCQ solving, NEET strategy, vlogs, study with me, basically what is related to our medical life. And if you find our content relevant, helpful, please share with your friends and family and subscribe to our channel. Thank you.